फ्रेंड्स वेलकम्स टू BIREN'S एकेडमी देखो ये 100 MCQ अच्छी पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटी आपको देखा मिले 100 तो आपड़ निजे ट्राए करेंगे देखिए 100 रु केते रोचे देखो ये जो दी तीन जो एग्जाम है CBZ आउ संस्कृत आउ PET PCM तो ताको बेस करके मुझे आपण इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन नहीं बेसी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन नहीं आप देखूँ आपंकर 100 रु मिनिमम तो 70टा ठीक हवा दरकार यदि 70 रु अधिक ठीक होगा ताले आप बहुत बढ़िया प्रिपेरेसन अच्छे सबू चैप्टर को ये मिसई जी जी इंपोर्टाट चैप्टर आमर सब चैप्टर को मिसई मुझे क्वेश्चन 100टा नहीं आपण तो चलते डेरी न करें देखा जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे है कि तो चलतु आम देखा कौन कौन क्वेश्चन मुझे छोट करदे सो आपन को प्रथम भाव गोटे सेकेंड 2 सेकेंड टाइम देवी तापर आंसर आपन आगे मुझे आनबी है किसी डिटेल एक्सप्लेनेशन करार ना कारण टाइम आम जिते जल्दी जल्दी छाड़ा देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छे कौन पढ़ू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट रे गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट करा जाए कहार एडवाइस प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस यहाँ निश्चित आप जानी सारे आंसर तो चलते आम देखा आंसर यार कौन हम आंसर हम कौन प्राइम मिनिस्टर सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आपण द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन क्या दियंतु चीफ जस्टिस पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर क्या दियंती प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन निश्चित आप जानी सारे आंसर सो चलन देखिए वाइस प्रेसिडेंट को दियंती रेजिग्नेशन किए प्रेसिडेंट नेक्स्ट For what period does the Vice President of India hold office? केते वर्ष जाए वा केते पीरियड जाए वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड करके रखी जाती 5 years टिल द एज ऑफ 65 years 6 years या आपंकर 2 years निश्चित आप यार आंसर क्वेश्चन पढ़ू पढ़ू जानी सारे कहीं आप से लेवल प्रिपेरेसन ही करेंगे निजको तो यार आंसर हो कौन 5 years बेजिबा नेक्स्ट Who among the following hold the office during the pleasure of the president है प्रेसिडेंट का प्लेजर रे किए ये कौन कि ऑफिस होल्ड करती गवर्नर इलेक्शन कमिश्नर स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर चलन देखा कौन हो यार राइट आंसर गवर्नर नेक्स्ट देखिए हाँ which of the following is not true regarding the payment of the emolument of the president है emolument of the president किए true नुआटी they can be reduced during a financial emergency they are shown separately in the budget they are changed on the contingency fund of India they are charged on contingency fund of India they do not require any parliament sanction so कौन है जो right answer चलन देखिए right answer जो they are charged on the contingency fund of India प्रेसिडेंट का पाखे गोटे contingency fund था तो सहीटा को चार्ज करा जाए नेक्स्ट देखिए the total number of the member nominated by the president to the Lok Sabha and the Rajya Sabha total member both देछि है लोक सभा और राज्य सभा एटा आपण मन निश्चित जानि सारिबे यार क्वेश्चन आंसर कोन हबो 12 + 2 16 18 14 12 सो राइट आंसर आपण निश्चित जानि सारिबे कोन जो 14 नेक्स्ट देखिए Which one of the following does not constitute the electoral college for the electing president of India? माने किए प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा किए पार्टिसिपेट करती ना किए ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट करती ना मन रखिए आउ दी जन भी यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करती सी हूँ दिल्ली आउ पुडुचेरी देखिए The Council of Ministers in a parliamentary type of government can remain in office till enjoy the support of the कौन is the right answer भावंतु Ministry of Member of the Upper House of Parliament majority of the members of the Upper House of the Parliament minority of member of the Lower House na majority of the member of the Lower House of Parliament तो चलें तो देखिए so majority of the member of the Lower House of the Parliament is your right answer नेक्स्ट देखिए which of the following appointment is made by the president of India है chief of the army speaker of the Lok Sabha chief justice of India chief of air force किए ये
किए हो राइट आंसर कहतु नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन हो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अपॉइंटमेंट करते नहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को किए अपॉइंट करते लोकसभा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट या सिटीजन ऑफ इंडिया सो राइट आंसर कौन हो आपंकर प्रेसिडेंट नेक्स्ट देला द फास्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज किए हो फास्ट वुमेन गवर्नर इन फ्री इंडिया देखु सो देखिए यार राइट आंसर निश्चित आप जानी छाड़े मिस सरोजिनी नायडू मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेंट फॉर प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट इलेक्शन पाई मिनिमम एज केते दरकार केते 35 इयर्स दरकार नहीं देखिए द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट एगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रिफर्ड बाय कौटी प्रिफर करा जोटा प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस रे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ना लोकसभा कौटी एटा करा ना बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नेक्स्ट देखिए द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी व्हेयर सच ए सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय है कि जो आपणकर जो यूटी रे चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी जोटी सी सेटअप एग्जिस्ट कर सी क्या द्वारा अपॉइंटमेंट होता देखु कौन हो राइट आंसर ना लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं देखिए हु आर द फास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप जानते नेहरू इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ जदि कौन हो ना प्रेसिडेंट का डेथ हो तो वाइस प्रेसिडेंट ये केते पीरियड जाए एक्ट करेंगे 1 year 3 months 6 months या 2 years राइट आंसर इज 6 months नेक्स्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कन्सिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किए रही प्रथम ऑप्शन देखो कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिप्यूटी मिनिस्टर ना कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ना प्राइम मिनिस्टर ना कैबिनेट मिनिस्टर किए जो राइट आंसर कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर ना देखिए हु administer the oath of office to the president of India before he enter open the office किए शपथ नियंती चीफ जस्टिस स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर राइट आंसर कर जो चीफ जस्टिस शपथ ग्रहण कराती हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन किए नन ऑफ द अबव डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किए जो राइट आंसर हम हु एमंग द फॉलोइंग एज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन देखिए ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट लगी पर्सन हु इज ए नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैंने पार्लियामेंट मेंबर नथिबे किंतु मिनिस्टर द्वारा बा अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 months 3 months 12 months 6 months केते जो ना 6 months नहीं देखो व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर केते बड़े प्रेसिडेंट यूज करता डिस्क्रिशन तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा ओनली व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिजॉल्व ना इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ना इन ऑल सर्कमस्टेंसेस तो कौन है जो राइट आंसर व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा से तरह कौन की अपॉइंटिंग करता नहीं देखिए इफ इन ए कंट्री देयर हैपेंस टू बी द ऑफिस इन मोनार्की आज जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिस मोनार्क विल बी कॉल्ड कंट्री कौन कि मोनार्क चलती पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चलती से मोनार्क आम कौन कह हेड ऑफ द स्टेट ना हेड ऑफ द कैबिनेट ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट ना बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट कौन हो राइट आंसर चलन देखिए ना हेड ऑफ द स्टेट हो राइट आंसर नेक्स्ट लिखिए one features distinguishing the Rajya Sabha from the विधान परिषद इज माने डिफरेंस कौन रहा गोटे फीचर्स को देखिए राज्य सभा विधान परिषद पावर ऑफ इम्पीचमेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर या टेन्योर ऑफ मेंबरशिप कौन है जो राइट आंसर पावर ऑफ इम्पीचमेंट नेक्स्ट कहला चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट आर एक्स ऑफिसर मेंबर ऑफ द सबू चीफ मिनिस्टर सबू स्टेट एक्स ऑफिसर मेंबर कार होता प्लानिंग कमीशन ना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ना इंटर स्टेट काउंसिल ना फाइनेंस कमीशन कौन है जो ना इंटर स्टेट काउंसिल है जो राइट आंसर
नेक्स्ट देखो हु अमंग द फॉलोइंग हैव द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैव द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर पब्लिक मनी इन इंडिया क्या पाखर राइट अच्छी जे कि एक्सपेंडिचर करियो पब्लिक मनी इंडिया स्पीकर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट राइट आंसर देखिए कौन हो यार ना प्रेसिडेंट Which among the following is not essential qualification for appointment as governor? है कोटा essential qualification रही he must not be a member of either house of the parliament ना he should be a member of the state to which he is being appointed ना he should be a citizen of India ना he must have completed the age of 35 years कौन हम देखो राइट आंसर जब आम देखा कौन हो he should be domestic of the state to which he is being appointed देखिया द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्य सभा अकॉर्डिंग टू जो प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर राज्य सभा करती कौ हिसाब से देखो जानी आप ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर द डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विस नेक्स्ट कला व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन जनरल एंड सजेस्ट ameliorative measures को आर्टिकल द्वारा आर्टिकल 342 344 340 339 सो राइट आंसर इज आर्टिकल 340 ने देखिया हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एनी विधानसभा ओनली लोकसभा या राज्यसभा कौन है राइट आंसर देखो ना आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने देखिया Who was the member of the Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India? किए थे राज्य सभा मेंबर जो फास्ट अपॉइंटेड कराइला इंडिया प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री चरण सिंह मोरारजी देसाई आ इंदिरा गांधी राइट आंसर कौन हो इंदिरा गांधी व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटिंग एज गवर्नर गवर्नर को अपॉइंट करने मिनिमम एज के दरकार 35 40 25 30 सो राइट आंसर इज 35 इयर्स चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी था प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली या गवर्नर कौन लेजिस्लेटिव असेंबली देखिए द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्स इज एक्सरसाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कंट्रोल जो आर्म फोर्स रोचे एक्सरसाइज क्या द्वारा होता है कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर विथ प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 3 चीफ ऑफ द आर्मी नावी एंड एयर फोर्स ऑफ या प्रेसिडेंट सो कौन है राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन गोटे कौन था स्टेट ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट ना ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नर ना ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट कैबिनेट कौन है राइट आंसर चलन देखिए राइट आंसर है ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन अच्छी हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर कनेक्टिंग द डिफेंस कंसर्निंग द डिफेंस सर्विस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर या कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर किए जो ना डिफेंस मिनिस्टर नेक्स्ट क्लास हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट री-इलेक्शन पोस्ट में प्रेसिडेंट केथर से हो पार इलेक्शन वंस 3 टाइम्स 2 टाइम्स या एनी नंबर ऑफ टाइम्स कौन है राइट आंसर ना एनी नंबर ऑफ टाइम्स देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैव द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट बने पार क्या पाखे पावर था स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम कोर्ट सो देखिए क्या पाखे पावर थी ना प्रेसिडेंट नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑन व्हिच एडवाइस इज सॉट प्राइम मिनिस्टर बाउंड की एडवाइस करने इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो डिजायर यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इच्छा करुवे येस नो इट्स डिस्क्रेशनरी सो राइट आंसर कौन हो येस नेक्स्ट लिखला व्हेन vice president officiates as a president he draw the salary of chairman of Rajya Sabha मैंने वाइस प्रेसिडेंट जो कौन प्रेसिडेंट कम करते सालारी ड्र करते चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोथ एएनसी प्रेसिडेंट ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो राइट आंसर कौन है प्रेसिडेंट
नेक्स्ट क्लास हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट किए एटी मीटिंग अटेंड कर पारिबो यूनियन कैबिनेट रो प्रेसिडेंट कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बा डिप्यूटी मिनिस्टर राइट आंसर कौन जो कैबिनेट मिनिस्टर नेक्स्ट देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द यूपीएससी है यूपीएससी केते नंबर ऑफ मेंबर फिक्स करने किए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रहा वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर या कैबिनेट सेक्रेटरी सो राइट आंसर कौन है जो प्रेसिडेंट देखिए अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कार एडवाइस रे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे आर्टिकल 352 लगे ना कैबिनेट एडवाइस रे देखिए हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉट द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल क्या एक्ट करिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना प्रेसिडेंट अवेलेबल थे ना वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल थे सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ स्टेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑडिटर जनरल सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट आंसर है जो देखिए ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इश्यूड अंडर आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विदिन 3 months या 2 months 1 month और 6 week कौन है जो ना प्री लोकेशन मन रखता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इश्यूड अंडर आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विदिन कहते हैं ना 2 months नेक्स्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहती क्या द्वारा अपॉइंटमेंट होता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रेशन ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना पार्लियामेंट कौन है जो राइट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नहीं देखो द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूनियन कैबिनेट कौन है जो कार एडवाइस रे ना प्राइम मिनिस्टर द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू कार रेस्पॉन्सिबल था राज्य सभा प्रेसिडेंट हाउस ऑफ द पीपल ना प्राइम मिनिस्टर कार रेस्पॉन्सिबल था ना हाउस ऑफ द पीपल नेक्स्ट कहला नेक्स्ट देखो आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रेसिडेंट पावर टू गेट read information the council of minister na prime minister duty regarding keep the president informed about the government decision with policy na emergency power of the president by president power to send advisory message to the parliament what is your right answer here na president's power to send advisory message to the parliament the maximum duration for which the vice president may officiate as the president maximum duration कितना थी ना 6 months The president rule in a state can be continued for maximum period of president rule केते जाए कंटिन्यू नहीं पारिबो ना 6 months जाए The chairman and member of the state public service commission are appointed by कहा द्वारा अपॉइंटमेंट कराई चेयरमैन बा मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर When a state governor dies or resigns, who normally exercises his function till new governor is appointed है जो गोटे स्टेट गवर्नर का डेथ हो जाए रिजाइन होती नॉर्मली से फंक्शन को एक्सरसाइज करते टिल न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड सो कौन हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गवर्नर ना पर्सन डेजिग्नेटेड बाय स्टेट कैबिनेट तो कौन हो राइट आंसर ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं देखो व्हेन a final emergency proclaimed final emergency केतबेले आसीबो यूनियन बजट will not be presented final emergency आसे salary and allowance of any class of employee may be reduced repayment of government debt will stop payment of salary to public servant will be postponed कौन है राइट आंसर ना salary of allowance of any class employee may be reduced नेक्स्ट देखिए who appoint the chairman of the UPSC क्या अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर के ना प्रेसिडेंट Which among the following is correct regarding the governor of a state? He can recommend the president impose the president rule in the state. No money bill can be introduced in the state legislature without his prior permission. He has the power of issuing ordinance when the legislature is not in session. All of the above. So right answer is all of the above.
देखला इफ द प्रेसिडेंट वांट्स रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू यदि प्रेसिडेंट तांको ऑफिस को रिजाइन करिया को चाहउछनी से कोन क्या को लिखि देबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट क्या को देबे ना वाइस प्रेसिडेंट इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइस हिज आउट कौन है राइट आंसर यस द काउंसिल मिनिस्टर डिजायर यस नो द राइट आंसर कौन है यस द 5 टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द जो 5 ईयर जो आम कैलकुलेशन करिया प्रेसिडेंट को लगे केबेट तुम कैलकुलेशन करिया फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ आज्यूम ही चार्ज ना डेट ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट ना डे ही आज्यूम चार्ज ना फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही आज्यूम चार्ज कौन है ना डे ऑफ द डे ही आज्यूम चार्ज हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एक्स ऑफिसर चेयरमैन किए ना वाइस प्रेसिडेंट देखला अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेटेड एट एनी स्टेट इन इंडिया कौ आर्टिकल अनुसार जो माने स्टेट रे कौन की प्रेसिडेंट रूल लग पारे देखो 326 370 380 356 राइट आंसर जो 356 at a time president rule can be imposed on state for a maximum period of 1 year 2 year 5 years 2 years या 4 years राइट आंसर कौन है जो देखिया ना 1 year ये देखो ये टूटा आंसर थिला आपण देखिए 51 आंसरटा मैं आपको देखे दूची एटा एक्चुअली 51 देखिए 51 जो देची द चेयरमैन ऑफ द मेंबर स्टेट पब्लिक कमिशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट हबा एटा प्राइम मिनिस्टर न एटा प्रेसिडेंट हबा मन रखते तो चेयरमैन द प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया चेयरपर्सन किए चेयरमैन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जानते किए प्राइम मिनिस्टर देखला when parliament is not in session the president can promulgate an ordinance which is to be ratified by the parliament within 6 weeks from the assembly of parliament 6 months from the assembly of the parliament 6 weeks from the date of issue of ordinance 3 months from the date of issue of the ordinance so right answer कौन है 6 weeks from the assembly of the parliament नहीं देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्रोमाइजिंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट असेंबली ना इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ना इलेक्टेड मेंबर दैट इज राइट आंसर इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं देखिए इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट विदिन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड है नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्टेड हो पारे ना विदिन 6 मंथ नहीं देखिए द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी इन केस ऑफ को केस रेटा प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगे पारे थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ थ्रेटनिंग द कंट्री सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ना फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए पर्टिकुलर स्टेट राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट जरा in the election of the president the value of the vote of the Lok Sabha member president election ने जो आपनकर लोक सभा मेंबर कर भोल कौन था differed according to the geographical size of the respective state and none of these above ना differs according to the number of votes as a member of represent is the same right answer differ according to the number of votes a member of represent next देखो the Indian president कौन is your real executive titular executive na none of the age one titular executive नेगला minimum age required for becoming the prime minister of India जानते केते 25 years the president may for violation of the constitutional be removed from the office by का द्वारा से removed होता नहीं the prime minister the electoral college consisting of members of parliament and the state legislature the impeachment and non confidence vote so right answer is impeachment nedala in which of the following situation does the president act in his own discretion को situation ने भावंतु ना in returning a proposal of the union council of minister for the reconstitution नेक्स्ट एटी अपन देला द प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कार मेंबर थांती एनडीसी ना आरसी ना पीसी ना जोनल काउंसिल कार थांती एनडीसी द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय
क्या द्वारा स्टेट ये रूल कराऊ ना द गवर्नर ऑफ द स्टेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी व्हेनेवर सच ए सेटअप एग्जिस्ट अपॉइंटेड बाय एटा करथिले एटा भी करा है आई थिंक द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ थ्रू ऑर्डिनेंस only on subject contained in the concurrent list, not under no circumstances, not under on certain subject, even when parliament is in session or during the recess of the parliament. As well, during the recess of the parliament. Which of the following qualification is not essential for a person to become vice president? को qualification हवा दरकार नहीं ना he must be graduate. How many types of emergency have been visualized in the Constitution of India? जान दियो 4, 3, 1, 2. Right answer is 3. The impeachment proceeding against the vice president can be initiated. Vice president को initiated हो पारिबो कहबा ना only राज्य सभा मनते vice president रे impeachment start हो पारिबो दुटा क्वेश्चन आस्तिला who appoint the lieutenant governor of Jammu and Kashmir किए अपॉइंटमेंट करथांदी ना president नेदला president of India can be removed his office by the parliament, chief justice of India, prime minister, lok sabha. Answer is parliament. If the president returns bill sent to him for assent and the parliament once again passes the bill in the original form, then the president अब कौन करिवे ना gives assent to the bill. If a minister lodges a no confidence motion, then Lok Sabha is dissolved, only prime minister and the prime minister resign. Now the whole council of minister resign, now the minister resign. Right answer कौन है? Now the whole council of minister resigns. The only one instance when the president of India exercises power of veto related to Indian post office, na dowry prohibition bill, na Hindu code bill, na PIPSO. Right answer Indian post office. Next, the control of the preparation of the electoral rules for parliament and legislature vests with the president, election commissioner, cabinet, or prime minister. Right answer is election commission. Next, what is contained in the 10th schedule of the constitution? कौन लिखा है जी 10th schedule constitution देखो तो कौन ना provision regarding disqualification on grounds of defection. The election commission hold election for like election commission जो election hold करंदी कहाँ कहाँ election hold करंदी ना तो parliament, state legislature and the post of the president and the vice president. For the election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filled by किए करि परिबे any citizen of India whose name appears in the electoral roll of constituency. In India, political party are given recognition by election commission, speaker of Lok Sabha, president law. जो election commission. The vice president is elected by an electoral consisting of member of जो both house of parliament. The election commission does not conduct the election to the कार election करते नहीं that आप जानते हैं हमारा local body. The maximum age prescribed for the election is president is no such limit. No such limit. The power to decide an election petition is vested in the what लिखा है जी election commissioner. To elect the president of India, which one of the following election procedure is used? A system of proportional represented by means of single transferable. In which year the first general election held in India? जानती बेटा क्यों यार 51-52. Election to the House of the People and the Legislative Assembly by state India are adult franchise. Who appoint the Chief Election Commissioner of India? Na President. Which among the following is not part of the electoral reform? Installation of electoral voting machine, appointment of election commissioner, registration of political party, disqualifying the offenders. Right answer is installation of election of voting machine. A recognition to a political party is accorded by na the election commissioner. The chief minister of state of India is not eligible to vote in the presidential election if he is a member of the upper house of the state legislature. So itla 100 question so thank you for watching this video.